Hello everyone. Now let's start with the topic which is rural tourism. Video lesson first. Now as you all can see, the content for the course is first, the countryside, a resource for tourism. Second, the demand for rural tourism. Third, planning and managing rural tourism. Fourth, marketing the countryside for tourism. And the fifth one is concept of sustainable and responsible rural tourism. Now, let's talk about what this course would include. It would include 20 video lessons throughout this course. As you all can see, this is our first session. So what will we discuss throughout this session? That would be introduction to countryside tourism, potentials of countryside as resource for tourism, and the categories of rural tourism. As you all can see, we are going to discuss about meaning of countryside tourism, types of rural tourism, and potentials of countryside tourism. As you all can see, everything you need to know about is rural tourism. So let's start with our first slide, that is what is rural tourism. As you all can see, rural tourism is a type of tourism activity in which the visitor's experience is related to a wide range of products generally linked to nature-based activities, agriculture, rural lifestyle or culture, angling and sightseeing also. It also showcases the rural life, art, culture and heritage at rural location. Now let's go to the next one, which is characteristics of rural tourism. So let's begin with the first point. The tourism activity took place in the countryside and community participation or initiative is a prerequisite. It incorporates different form of tourism and is multifaceted. Third, architecture of the village is promoted by locally providing accommodation that would be hygienic in nature and should be served. A tourism shopping center can be opened so that the tourist can purchase local products like food, tea, honey, fruits, painted poetry, carpets, traditional embroideries, and etc. Now, locally available traditional transportation is used like a tractor, bicycle, bullock cart, etc. Rural tourism focused must be on something to see, something to do, or something to buy also. Now, let's talk about types of rural tourism. As you all can see, there are total 5 types of rural tourism, in which first one is agri-tourism, second is event and festival tourism, third one is sports tourism, fourth is heritage tourism, and the last one is ecotourism. There are also subparts of these 5 types of rural tourism, which include in agri-tourism, there is farm tourism. So it means it is a tourism in which people visiting working farms or other agriculture operations for the purpose of enjoyment, education or other activity involvement. For example, opening a winery on the farm and inviting guests to spend the day and weekend tasting wine also. So, the wine tasting package may include overnight logging in a cottage on the poetry. So that come into our first tourism type, that is agri-tourism. Second one is volunteer tourism. Volunteer tourism, it means it comes with the two combination of words, that is volunteer plus tourism. It is also sometimes referred as to volunteer travels or volunteer vacation. Volunteer tourism is a form of tourism in which the travelers participate in voluntary work and typically for a charity.
The main objective of this volunteer tourism is to provide the assistance to those who need it. It grades that it is also provide the opportunity for participants to travel and experience an existing destinations. Woofing is the third type of agri-tourism. It means traveling to the places for the purpose of volunteering on an organic farm there. Now, second one is events and festival. There are total three subtypes of this type of rural tourism, that is event and festivals. The first one is gardening and flower events. It is a type of event or a festival or a tourism in which the farmers garden their garden and flowering them, which means there are also some types of event like tulip festival, rose festival, OT flower show, international flower show, and many more which come under our gardening and flower events. Now the next one is cultural event. Now, the second one is cultural events. A cultural or festival event is a celebration that focuses upon a theme or may run for hours to weeks. That means this is an example of event and festival tourism. The third one is music festivals. In this, it is an organized event typically lasting several days featuring performance by various musicians, singers or group of singers as well, which come into our rural tourism type. Now let's talk about sports tourism. There are total four types of sports tourism, in which the first is fishing holidays. Fishing holidays is also, you can say there, it also follow the same concept like golf holidays, only it replaces the golf with fishing. The purpose of your holiday is to go out and enjoy different fishing sport that you are not used to. That include offshore fishing, freshwater fishing, and you can name it accordingly. That also come under our rural tourism subpart. Now the second one is cycling holidays. Cycling holiday is a holiday which is involving a tour of an area or region by bicycle. For example, let's talk about giving it in a sentence form, in which book a 2-hour cycling tour for 20 days. Discover it with the 7-night self-guided cycling tour. So these are the some example of cycling holidays which come under our sports tourism. Now the third one is walking holidays. Walking holidays, it can be also said as any kind of walking. It does not include mountains or something like hilly areas. It could be a long path, canal paths, across moorlands and many more. It means a holiday by alone or doing with your friends, which come under our walking holidays. Now let's talk about golf holidays. Golf holiday is a term used to describe trips undertaken by the person for which the main purpose is to play golf. Golf may also be pursued as a secondary activity. For example, someone on a beach holiday playing a round during their vacation. So that come under our sports tourism. Now let's go to our fourth type of rural tourism, that is heritage tourism, in which its subpart is village tourism. So let's talk about village tourism. Village tourism is a tourism that focuses on actively participation in rural lifestyle. It can be a variant of ecotourism. Many villages can facilitate tourism because many villagers are hospitable and eager to welcome or host visitors. Agriculture has become more merchandise and require less manual labor. So that come under our heritage tourism.
Now, let's talk about the last and the fifth ecotourism. The sub-part of this tourism is glamping. It means a form of camping involving accommodation and facilities more luxurious than those associated with traditional camping. So it come under our ecotourism subpart. The second one is green tourism. Green tourism is a form of tourism involving responsible travel to natural areas, conserving the environment, and improving the well-being of the local people. That come under our ecotourism. Now, let's talk about homestay tourism. It means you can say that a period during which a visitor lives with their local family. The idea of homestay tourism is to accommodate tourists with a local family, thus enable the tourist to learn about local lifestyle, culture, nature, and etc. Now, let's talk about the last one is campaigning. It means the act of staying and sleeping in an outside area for one or more days and nights also, usually in a tent. The main purpose of this camping is to disconnect from technology and reconnect with the nature. Some families go to campaigning to revitalize the relationships away from their distraction at home. So as you all can see, these are your 5 type of rural tourism with their subparts and subtype of rural tourism, which are self-explanatory in their own. So now let's talk about 5 popular rural tourism destinations. The first one is community tourism in Kutch. Second is farming in rural Punjab. Third is high altitude rural tourism. Fourth one is Balafpur Danga village. And the fifth one is UNESCO World Heritage Sites. As you all can see, now let's talk about how rural women interlink with the rural tourism, and you can see that how it signifies that the rural women, they both denote to their rural tourism. First one is rural tourism can create long-term employment and provide skill and skill training and career development opportunities for women also. Rural tourism will boost women empowerment and provide young architecture livelihood diversification. Rural tourism has the potential of establishing mediums and small enterprises started by women entrepreneurs. Rural tourism will promote local production, education, art and architecture, community self-esteem and pride, heritage and nature conservation also. Rural tourism will create new infrastructure, superstructure, help to maintain local services and facilities, and also help to improve quality of life for women also. Now, let's talk about how increasing interest in rural tourism, that how rural tourist is going more in rural area as compared to urban area. As you all can see, rural tourism help to garner knowledge on agriculture, farming and local governments etc. Rural tourism help to remove myths about rural lifestyle that may exist in urban minds, like villagers are unhygienic, rural life is unsafe etc. Rural tourism will help a person to explore the vast diversity that breathes in the interior of the India. So, the overall summary of this session is that how rural tourism is more beneficial than urban tourism. As in rural tourism, tourists visit the home of local people to understand their customs, traditionals, lifestyle, food habits, their festival, folk dance, songs, ritual, etc. It also involves a study, research and purchase of local products which help in increasing the livelihood of the rural people. So, एसटी कॉलेज फॉर वुमेन मोगा की तरफ से मैं डॉक्टर नीना नेजा प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज
जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से कारीगरी यानी स्किल और कारोबारी यानी एंटरप्रेन्योरशिप के रिगार्डिंग वीडियो कॉम्पिटिशन्स स्मॉल बिजनेस मैनेजमेंट एंड रूरल टूरिज्म के ऊपर बांधे गए थे। इसमें कंट्री साइड टूरिज्म को हम प्रमोट करते हैं और स्टूडेंट्स की तरफ से बनाई गई उनके टैलेंट को एक्सप्लोर करने के लिए रूरल टूरिज्म के ऊपर बच्चों ने मेहनत की है। यार कैसे हो सारे जने? बढ़िया। और क्या चल रहा है सबका? स्टडी के साथ साथ जॉब ढूंढ रहे हैं। आप सीनियर हो, आप कुछ गाइड करो। अरे मुझे तो लगता है जैसे हमारे फैशन डिजाइनिंग वाले हैं वो देखो कितना मतलब अपने स्किल्स को लेके पर्टिकुलर है और अर्न भी करते हैं, तो हमें भी ऐसे अर्न करना चाहिए। ये है MCOM की स्टूडेंट समृद्धि। इसने 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। हेलो मैम। हेलो मैम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। आई एम फ्रॉम कैनेडा और मेरे को कंट्री टूरिज्म करना है, तो मेरे को जानना है कि आप उसमें क्या क्या। यस मैम, हम लोग कंट्री साइड टूरिज्म है, मोस्टली रूरल टूरिज्म को ज्यादा प्रमोट करते हैं एंड इसके लिए हम लोग विलेजेस को आप एक्सप्लोर करवाते हैं एंड इसके लिए हमारे पास 3 डेज, 7 डेज एंड 15 डेज के पैकेजेस हैं। तो 3 डेज पैकेजेस में आप क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करोगे? मैम ये हमारी लिस्ट ऑफ सर्विसेज है जो हम प्रोवाइड करते हैं एंड इसके साथ जैसे हम आपको ट्रैक्टर राइडिंग वगैरह हो गया, लाजपत राय जी की जो जन्म स्थली है हम आपको वो भी विजिट करवाएंगे, प्लस हम आपको फार्मिंग जैसे होती है वो दिखाएंगे एंड बहुत सारी और चीजें भी दिखाएंगे। ओके, तो आप मेरा 3 डेज वाला पैकेज डन कर दीजिए। मैम इसकी कॉस्टिंग हमें लाइक 7 to 8,000 तक आएगी आपको। ठीक है। हाँ जी मैम। तो ठीक है, आप एक बार ये डन कर दीजिए। ओके मैम, थैंक यू मैम। थैंक यू। एक्सप्लोर करने के लिए हमने खुद के पिन को चूज किया है एंड आई होप आपको बहुत सारी चीजें यहाँ देखने को मिले एंड आप बहुत एंजॉय करें। हम आपको पंजाब हेरिटेज का आपको एक्सपीरियंस करवाएंगे, जहाँ पे सबसे पहले आते हैं हमारे खेत जिसमें हमारे जो फार्मर्स हैं वो अनाज उगाते हैं और यही अनाज हमारी मंडी तक पहुँचता है, लेकिन अफसोस हम 1 मिनट भी नहीं लगाते इस अनाज को छोड़ने में। क्या मैम आप इसका एक्सपीरियंस करना चाहेंगे? श्योर, व्हाई नॉट। मैं तो थक गई। या हाँ जी मैम, देखिए आप अपने अब हम आए हैं गुरुद्वारा देखने। ये है गुरुसर गुरुद्वारा और इसका इतिहास जैसे कि आप देख ही रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है एंड अब हम माथा टेकने चलेंगे।
टर्फ का नया ग्राउंड है जिसमें हॉकी प्लेयर्स को ट्रेनिंग दी जाती है, या हॉकी भी खिलाया जाता है। नाइस। तो मैम यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, हम ये देखते हैं। मैम हम आपको किसान मेले पर लेकर चलते हैं। मैम ये डुड्डी के सालाने मेले की तैयारी हो रही है और कल हम आपको यहाँ घुमाने लेकर आएंगे। रौनक हो जू घट वे चल मेले नू चलीए मल्ला कट कुड़ते दे बट वे चल मेले नू चलीए आले फड़ कुंजियां ते सांभले तिजोरियां आले फड़ कुंजियां ते सांभले। चलिए मैम अब हम आपको लाल लाजपत राय जी की जन्मस्थली पर लेकर चलते हैं जहाँ पर बहुत ही सुंदर पार्क बना हुआ है। इसको हाँ जी जो लाला लाजपत राय ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ हाँ जी ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ 28 ਜਨਵਰੀ 1865 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਆਏ ਸੀ। हाँ जी ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈ ਆ 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ। 1990 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ गवर्नर राज ਸੀ। हाँ जी लाइब्रेरी में जाएंगे जो कि वहाँ काफी अच्छा कलेक्शन है हमारे पास बुक्स का। आगे ही ऐसे बहुत सारी बुक्स का कलेक्शन है। आइए मैं आपको बताऊं। ये उन देशभक्तों की मूर्तियां हैं जिन्होंने गदर लहर में अपने परिवार की परवाह किए बिना अपना योगदान और बलिदान दिया था। अब हम आपको अपना निजामी तरीका हमारे लोग जो है वो ऐसे काम करके अर्न करते हैं अपनी लिविंग को भी। आप क्या कर रहे हो? मैं स्टिचिंग कर रही हूँ। आप देख सकते हैं हमारे बाकी सब चल रहा है। मैम ये ट्रेडिशनल ज्वेलरी है जो लड़के हैं शादी जो मैम ये जो है ये पीढ़ी बना रहे हैं जैसे कि आप वो सैंपल देख ही सकते हो कि पीढ़ी में जो वो चरखा चलता है। हाँ जी
ये नारा है और रस्सी तैयार कर देना। हाँ जी। आप बताओगे आप क्या कर रहे हो? तो आप इसका क्या चार्ज करते हो? ओके। ये सिलाई जो हम लोग थिएटर वगैरह ये करते हैं, जो वो बना रहे हैं। आप क्या कर रहे हो? अब फुलकारी की कढ़ाई है जी, उपाड़ की कढ़ाई है। हाँ जी। सैंपल रखे हुए हैं जी। हाँ जी। ते जिदा किसी ने करवानी हो दुपट्टे ऊपर कढ़ाई या कलर कॉम्बिनेशन डिजाइन बड़ा छोटा या कितना करना है। हाँ जी। तो ये आपने कहाँ से सीखा हुआ? ये मेरी दादी भी काम करते थे। पहला दादी ने तो पहला भी उन्होंने हाँ जी। बड़े क्लोज बड़े उन्होंने तो सीखा है। ओके। तो आप ये क्या कर रहे हैं? मैं ये गेट में डाली इसको ये हैंडल होती है, ये इस कपड़े से बनती है और उसके साथ ये मैम पक्का है। आप क्या कर रहे हो? ये हम सुबह कर रहे हैं, ये कढ़ाई होती है, ये चादर पे की जाती है। ओके। तो ये आप कितने में करके देते हो? मतलब प्राइस क्या रखते हो? मैम ये आप क्या कर रहे हो? चिड़िया बनाना है। हाँ जी। ये चिड़िया जो आप आगे कराने से डेकोरेशन में यूज कर सकते हो। और ये साथ में हमें बोल रहे हैं लगा हुआ है, ये हिंदी डॉल्स भी बनाई है डेकोरेशन। डेकोरेशन नहीं खेडन नहीं बच्चों की चिड़िया भी बच्चों की खेडन नहीं डेकोरेशन नहीं। तो ये आप क्या कर रहे हो? मैं विंडो बना रही है जी। ओके। ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਾਗੋ ਵਗੈਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ। लावा में आके पिक्चर करते हैं। It's reddish. ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸੰਜੋਗ ਲੱਗੇ ਸੀ ਨਿੰਬੂ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਚ ਲਾਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ। Hello ma'am, please have a seat. मुझे आपका जो आपने मुझे विजिट करवाया मुझे बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। You're welcome ma'am. और आपकी पेमेंट कितनी हुई? 8,000 ma'am. Thank you so much ma'am. Thank you so much. I would love to visit here again. Thank you so much. Thank you ma'am. We will be waiting for you. Thank you. Ma'am, this is for you. Really, thank you. Please do visit again. Yes.